Welcome back to my YouTube channel Online Academy. So the today's topic is COVID again. So basically we also nowadays people totally forgot about the coronavirus, and many of the people thinks that COVID is just a normal flu. It doesn't affect our body very much. So today I'm going to talk about whether the COVID is just a normal flu or it affects our body. Right? So let's see. So firstly, we are going to talk about the symptoms of COVID-19. So basically, there are three types of symptoms, which is first one is mild, and second moderate, and the third one is high. So as we all know that mild symptoms are the cough, fever, cold, and fatigue. Right? These are the mild symptoms which you can see basically. So the serious symptoms are the shortness of breath, chest pain, loss of speech or movement, or pink eyes. These are the serious symptoms which we can see on when whether a person is having a COVID or coronavirus. Right. So let's see. My first we talk about mild symptoms. Mild symptoms can manage at home. Right, we can manage these symptoms at home, but you must be very careful about your diet and health. Also follow all the precautions and the instructions given by the doctor. The symptoms can be shown in 5 to 6 or up to 40 days 14 days basically. Sorry, symptoms can be shown into 5 to 6 days और up to 14 days, which means कि symptoms जो हैं 14 days के अंदर हमें max to max 14 days के अंदर हमें symptoms शो हो जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली कि सिम्टम्स दिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए. ये सबको आपको पता है. तो बेसिकली मैं एक एम्स की रिपोर्ट के बारे में बात करूँगी जो नाउ डेज जो एम्स ने बोला है, एम्स की रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करते हैं. सो एम्स कहता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. मैक्सिमम पीपल्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिकवर होते हैं, बट some people experiences persistent symptoms like breathlessness, which means कि सांस की कमी, fatigueness and erratic heartbeat, gastrointestinal problems and muscle and joint pains for several weeks तक उनको ये सारी problems होती हैं after COVID, right? And few develop cardiovascular as well as respiratory damage. Few of the people develop these kind of damages also. If you look at the available data, like इंडिया में जो भी कोविड पेशेंट अफेक्टेड हैं उसके हम उस डाटा को अगर हम देखते हैं, अबाउट 60 to 80% ऑफ द इंडिविजुअल हु आर रिकवर फ्रॉम COVID-19 मे हैव सम फॉर्म ऑफ सीक्वल या अ कंडीशन बाय अनदर डिसीज, विच मीन्स कि जिस पर्सन को भी कोविड हुआ है या जो भी पर्सन कोविड से इफेक्टेड हुए हैं उनको कोई ना कोई अनदर डिसीज़ लगती रही है उसके बाद. इट कैन बी माइल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैटीग एंड बॉडी एक. इट कैन बी माइल्ड, ये माइल्ड भी हो सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी सीरियस इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू बी ऑन लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी. ये जहाँ तक माइल्ड हो सकते हैं, तो इसके अलावा ये सीरियस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की नीड हो सकती है. वी have had 2 individuals who have extensive lung fibrosis and are being advised to lung transplant. एम्स told that कि कुछ ऐसे उन्होंने पेशेंट्स देखे जिनको लंग ट्रांसप्लांटेशन तक की भी ज़रूरत पड़ी आफ्टर COVID-19. राइट, अकॉर्डिंग टू एम्स पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट इन एम्स सेड ओनली 12.6% ऑफ ऑल रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 trial participants were completely symptom free. Only just 12.6% are the people which are completely symptoms free after 2 months. Right, after 2 months of trial we can say that 12.6%, only 12.6% of the total population are completely symptoms free. Right, 32% have 1 or 2 symptoms and the 55% had 3 or more symptoms, which means maximum people had 3 or more symptoms of COVID after recovery from COVID. most common जो वो थे symptoms थे जो हमें देखने को मिले, which are fatigue, shortness of breath, joint pain, chest pain and cough. These are the common symptoms which we can see after recover from COVID, right? So the next is in critical COVID-19, which means the patient which are critical due to COVID-19, about 5% of the total cases, the infection can damage the walls and the lining of the air sacs in your lung.
विच मीन्स कि जो कोविड-19 से पेशेंट अफेक्ट थे उसमें से 5% ऐसे केसेस आए जिसमें उनके लंग्स को कैसे इफेक्ट हुआ, उनके लंग्स की लाइनिंग को, वॉल्स को और एयर सैक्स को बेसिकली डैमेज किया कोविड ने. As your body tries to fight, your lung become more inflamed and filled with fluid. Right? This can make it harder for them to swap oxygen and carbon dioxide. Which means कि जब हमारे lungs try करते हैं उससे फाइट करने के लिए हमारे लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, जिस वजह से हमारे को जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का स्वैप करना था वो टफ हो जाता है धीरे धीरे. So it is most worse than cancer. COVID is worse than cancer. How it is worse than cancer? Let's see. When a person is affected due to COVID, lungs become harder and as stone. Their weight shoots up fourth floor despite no increase in size. There is no increase in size, but the weight increases very much. Right? Lungs become very hard as like a stone. COVID inflicts greater damage on lungs than even cancer, TB and pneumonia, which means COVID have more effect on lungs. जितना कैंसर, टीबी और निमोनिया से अफेक्ट होता है उससे ज़्यादा अफेक्ट कोविड का हो रहा है हमारे लंग्स के ऊपर. आफ्टर अफेक्टेड द लंग्स, कोरोना वायरस डायरेक्टली अफेक्ट ऑन ब्रेन एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system means heart and the brain. These are the second most affected parts of our body. It's as if COVID closes each and every vessel, no matter how big or small. COVID can attack on each and every vessels of our body. Now, let's talk about the case, which we can see like बहुत ज़्यादा अभी ये केस को बारे में बात की गई है. तो ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अबरार करण, जिन्होंने ट्वीट करके इस केस के बारे में बताया था. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस केस. दिस इज़ अ नॉर्मल लंग, वी कैन सी इजीली. हियर इट इज़. This is a normal lung, right? Or this is the lung which is affected due to COVID. So you can see the difference. Basically, very easily you can see the difference of normal lung and COVID affected lung, right? So next we can talk. This is the US based. Basically US में ऐसे 20s की एज में एक फीमेल को कोविड अफेक्ट हुआ और सिम्टम्स जो थे उनके काफ़ी हाई थे, राइट? इसमें क्या हुआ, उनको क्या बोला गया कि इफ़ यू सी द लंग ऑन द राइट साइड, द पेशेंट दैट वाज रिमूव्ड, पेशेंट लंग जो रिमूव किया गया एंड द होल थिंग इज इन्फ्लेम्ड, स्कैटर्ड, जस्ट यकी, right? Nothing like the one on the left which is soft, smooth and able to irritate like a balloon. You can see, here's a diagram. जो नॉर्मल लंग है, जो राइट हैंड साइड पे है मेरी, वो है कोविड अफेक्टेड लंग, और जो नॉर्मल लंग है वो राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है. सो आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हो कि कितना यकी कितना ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है कोविड से. ओके, so it's just a girl whose age is 20 or 25, who is in their 20s. तो उनके लंग को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया. पर द ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अंकित भाट, this was the sickest patient whom he had ever given a transplant. सबसे ज़्यादा बीमार मतलब सबसे ज़्यादा सिक पेशेंट डॉक्टर ने बताया कि था जिसको उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन किया था आज तक. Like people used alcohol, people used to smoke, but after affected from COVID, the lungs conditions are very, very, very much critical, right? So because of all the inflammation, the lungs were completely plastered to tissues around them, and the heart and the chest wall and the diaphragm. This was the first case of irreversible COVID damage that was slaved by the lung transplantation in the USA. Given her young age and healthy status, otherwise it was worse than effort. Right? Let's hope she recovers. This may not be an option for most of the patients, but perhaps it could be save a few young healthy ones who were at the right place and who would otherwise die if no option remained. Like in this case is from USA. We can easily say that USA में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो लंग ट्रांसप्लांटेशन इज़ easily, very much easily, right? So people can afford, but in India the people cannot afford, so we must take precautions from COVID. So in just case, if anyone think that COVID is not affected very much, so you can see the condition of after when COVID is affected to the lungs, so you can see that basic difference, right?
So you must take precautions properly which were given by our government. Wear mask, use sanitizer, and etc and etc, right? So it is not just a common flu, it is really harsh to our body. So be protective. So what are the lessons given by the COVID-19 to us? Lesson क्या मिला हमें? Life is short, jobs are temporary, and health is wealth. राइट. सो बेसिकली हमें क्या है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी हेल्थ का. अगर हमारे पास हेल्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कमा भी सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं. सो अभी भी यही बात कहूँगी कि कोविड को नॉर्मल मत समझो, कोरोना को नॉर्मल मत समझो. कोरोना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. So that's it about today's video. Thank you for watching my video.